Good morning, class. Today we are going to study the new topic, which is the fraction. Okay, fraction. This is very important concept in the mathematics. You must have to understand about the fractions. Okay, fractions means what mean by the fraction? Fraction means a part. Fraction means a part, or when that means it is in general form. It is in general form. Fraction means a part of the whole. And whenever you have to describe it is in the mathematics term. So we can say that a number which is in the form of a upon b, whereas b should not be the zero. Okay, a number which is in the form of a upon b. ऐसे फॉर्म में नंबर होना चाहिए जो a upon b होना चाहिए. Whereas b should not be the zero. b जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए. b क्या नहीं होना चाहिए? जीरो. b should not be the zero. And a and b are the integers. a और b क्या होना चाहिए? Integers होना चाहिए. Got it now? So which is known as the fraction. So I have described to you the concept of fraction. Fraction is a number which is in the form of a upon b, but whereas the b should not be the zero, and a and b are the integers. A and b are the integers. This is known as the fraction. Now next concept, we have to classify the fraction. Here we can take the example like that. 3 upon 4, this is a fraction. 3 upon 4, this is a fraction. But 4 upon 3, this is also fraction. But these are the different type of fractions. This is a proper fraction, this is an improper fraction. So, depending on the fractions, we will classify the fractions. Okay, we will classify the fractions. We will understand how to classify the fractions. Okay, so here first one we will see the decimal fraction. Fractions we have understood. Now we are going to classify the fractions. Now in that first one we will see the decimal fraction. Decimal fraction is a fraction whose denominator is the 10 or multiple of 10. Denominator क्या होना चाहिए? Denominator is 10 or multiple of 10. Okay, then next one is the vulgar fraction. What we will see? Vulgar fraction. So what mean by the vulgar fraction? Vulgar fraction means whose denominator is other than 10. Whose denominator is other than 10. Okay, other than 10 or multiple of 10. Denominator is other than 10 or multiple of 10. It should be the multiple of 10, which is known as the vulgar fraction. Got it now? The next one we will see proper fraction. What we mean by proper fraction? Proper fraction is the fraction. Okay, proper fraction is the fraction whose denominator is greater than numerator. Suppose a upon b. Example 3 upon 4. Denominator should be greater than numerator, which is known as the proper fraction. And reverse of that, इसका उल्टा हो जाएगा improper fraction. Improper fraction में क्या होगा? a upon b whose numerator is greater. इसका numerator greater होगा और इसका denominator greater होगा. Okay, so for example 4 upon 3, जिसका numerator greater है, या फिर you can say that whose denominator is smaller, which is known as the improper fraction. Okay, so next concept we will see. The next concept we will see
There is another one concept, mixed fraction. Which one? Mixed fraction. Mixed fraction is which consists of integer plus fraction. Integer plus fraction. For example, 3 integer 1 upon 4. 3 integer 1 upon 4 or 4 integer, you can say that 5 integer 2 upon 3, which is known as the mixed fraction. Sometimes it is written like that also. 5 plus 2 upon 3. The meaning is same. Okay. So which is known as the mixed fraction. So you have understood the concept mixed fraction. The next concept is here. Unity. Unity. What mean by unity? When numerator and denominator a upon a, that means 4 upon 4. When numerator and denominator is same, that means the answer is the one. That means you can see that the fraction is the unity, or you can say the unity fraction. Then another one concept you will see. So fraction I have referred to. I have explained to you the classification. In classification, first one the decimal fraction. Decimal fraction is numerator is 10 or multiple of 10. Vulgar fraction, the numerator is other than 10 or multiple of 10. Proper fraction, denominator is greater. Improper fraction, numerator is greater. Mixed fraction, which consists integer plus fraction. And unity means when both are equal, numerator and denominator, then you can say which is the unity. Another one, equivalent fraction. We will see the equivalent fraction. Equivalent fractions. We will see the equivalent fraction. What are the equivalent fractions? When fractions have the same value. When two or more fractions have the same value. For example, 1 upon 2, 4 upon 8, 3 upon 6. These all are having the same value because 1 upon 2, 4 1 का 4 होगा, 3 1 का 3 होगा. These all are having the same value. So which is known as the equivalent fraction. Okay. The next concept which is the simple and the complex fraction. Simple fraction and complex fraction. See, when you can say simple fraction, when numerator and denominator both are integers. Both integers. When numerator and denominator both are integers, then you can say which is the simple fraction. And what is the complex fraction? When numerator and denominator इसके उल्टा हो जाएगा, a upon b. When numerator and denominator both are not integers, then you can say which is the complex fraction. Simple fraction क्या है? जिसका numerator और denominator integers है, so at that time you can say that which is the simple fraction. और इसका उल्टा जिसका numerator और denominator simple fraction, sorry क्या नहीं है, integer नहीं है, which is not integer, then you can say which is the complex fraction. Okay, that means you have understood the concept. This concept, if you have not understood, you can see the video in the repeat mode. I have given there the examples also. After that, we will see the like fractions, like and unlike fractions. Okay, we will see the like and unlike fractions. Like fraction. What mean by the like fractions? Okay, the meaning is in their word like, मतलब कुछ ना कुछ equal होगा, same होगा, like fraction. For example, 3 upon 8, 5 upon 8, 7 upon 8. When their denominators are equal in a fraction, when they are this is the like fraction. I am explaining to you
are the like fractions. And when denominators are not equal, unlike fraction. For example, 3/5, 6/, or 3/2, 1/3. Okay, so their denominators are not equal, so we can say that these are the unlike fraction. But we can convert unlike fraction to the like fraction. How to convert? See their denominator. Convert unlike to like fraction. How to convert? See their denominator. Take their LCM. So LCM of 5, 2 and 3. What is LCM? Is 30. LCM is 30. So make their denominator 30. So इसका denominator 30 कर लो. 3/5 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6/6 से. अभी 3/2 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15/15. यहाँ पे 1/3 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10/10. So क्या होगा? 3 6 18/30. 45/30 and 10/30. देखो इसको अनलाइक को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइक में. डिनोमिनेटर सेम हो गया? यस. सो वी हैव अंडरस्टूड like fraction, unlike fraction. Also I have explained to you how to convert unlike fraction to the like fraction by making their denominator equal. और denominator equal कैसे करना है? Denominator का LCM लेके. Okay. So we have understood this concept also. Now insert the fraction. Insert fraction. How to insert the one fraction, two fraction in between the given fraction? जैसे suppose में 4/3 और 5/7 ये दो फ्रैक्शन के इसके बीच में अगर एक फ्रैक्शन इंसर्ट करना है, हाउ टू इंसर्ट? इसके बीच में मतलब इन दोनों के बीच में डालना है इसको. सो हाउ टू इंसर्ट? फर्स्ट वी विल टेक देयर एडिशन. ओके, 4/3 प्लस इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे. 4 + 5/3 + 7. हाउ मच? 4 + 5 9 and 3 + 7 10. मतलब 9/10 को कहाँ डाल देंगे? इन दोनों के बीच में. सो इंसर्ट 4/3, उसके बाद ये 9/10 और उसके बाद 5/7. अगर एक फ्रैक्शन इंसर्ट करना है तो इन दोनों की एडिशन ले लेंगे. न्यूमरेटर की एडिशन न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर की एडिशन डिनोमिनेटर पे. यहाँ पे 4 + 5 कर दिया, 3 + 7 कर दिया. ओके, 9/10 और दोनों के बीच में इसको ऐड कर दिया. अगर टू फ्रैक्शंस ऐड करने तो किसी भी इन दोनों को सिलेक्ट कर लो या फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और उनको ऐड कर दो. ओके, सेम थिंग, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. दिस प्रोसेस व्हिच वी हैव फॉलोड हियर. ओके, अदरवाइज अगर 3 फ्रैक्शंस ऐड करने हैं तो पहले इन दोनों के बीच में ऐड कर देंगे. वो नंबर यहाँ पे आएगा, ये इधर का यहाँ पे आएगा, ये जो ऐड होगा वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये नंबर आएगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो इस टाइप से हम एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इफ वी हैव टोल्ड. सो लाइक दैट वी हैव टू ऐड. ओके, पहले ये ऐड हो गया, पहले दो ही फ्रैक्शन थे तो दोनों को ऐड करके एक फ्रैक्शन ऐड हो गया लाइक दैट. अभी और एक ऐड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऐड कर, इनको ऐड कर देंगे और इन दोनों के बीच या फिर इनके बीच में ऐड कर देंगे. उसके बाद और एक फ्रैक्शन ऐड करना है जैसे, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बीच में ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? हमें 1 2 3 4 5 और भी ऐड करने हैं. इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे और एक ऐड हो जाएगा. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और एक ऐड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसको इनके बीच में ऐड कर देंगे. जितने भी ऐड करने के लिए बोला है तो you can select the two fractions, add them at the numerator place and add the denominator to the denominator place. So like that you can add the fractions. Okay, this is the very simple concept how to add the fractions. Now next concept which we have to study here, addition and subtraction. Okay, addition and subtraction. When you have to add
You have to keep it in mind. If fractions are like fraction, अगर like fraction है, like fraction मतलब denominator same है. जैसे 1/3 and 2/3. Denominator same है, directly denominator एक ऐड कर सकते हैं. 1/3 plus 2/3. Next है numerator numerator में इसको ऐड करेंगे 1 plus 2 और denominator same है 3 so एक ही टाइम 3 लिखेंगे. Denominator इक्वल है मतलब ये दोनों की लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन है तब डिनोमिनेटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं. सो एज इट इज डिनोमिनेटर लिखेंगे. सो 3/3 हो जाएगा और उसका जो भी आंसर आएगा आगे या इसका 1 आ गया. ओके, द डिफरेंट आंसर विल बिकम इट इज डिपेंड ऑन द फ्रैक्शंस. अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक, ओके अनलाइक है, जैसे 1/3 है और 5/2 है. डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा. तो इनको ऐड करने के लिए सो 1/3 प्लस 5/2. 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 6. एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 और 2, एलसीएम आएगा 6. सो डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 3/6 प्लस ये हो जाएगा 15/6. अभी डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे. सो 6 I have written here and 3 plus 15 I have written at the numerator place. Now again you can do it addition. So 18/6, 18/6, 6 1 and 6 3. So your answer is the 3. 3/1. 3/1 is 3. So like that you can do the addition and it is same for the subtraction. जहाँ पे एडिशन करेंगे, जहाँ पे सब्सट्रैक्शन है वहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल वे. नाउ मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट वी विल सी द मल्टीप्लाई ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी. ओके, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी. वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई एट द न्यूमरेटर प्लेस and multiply at the denominator place. Only somewhat difficult which is the denominator, but for the denominator we will also use the one trick. See, multiply. How to multiply? See now, 3/7 multiply by 4/3. 4/3. How to multiply? यहाँ पे क्या है डिफरेंट है. 4/9. 4/9. Okay, I will change again. 5/2. So numerator का multiply 3 multiply by 5 15 and 7 multiply by 2 so 14. Directly numerator का multiply numerator में करेंगे, denominator का multiply denominator में करेंगे. या फिर किसी और एग्जांपल में जैसे 3/7 है और 5/9 है, यहाँ पे अगर डिवाइड हो सकता है वहाँ पे डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3 3 जा. अभी 1 5 जा 5 and 7 3 जा 21. 7 3 जा 21. Like that we will do the denominator multiply. ऐसे multiply करेंगे. Now division is somewhat different. See how to do the division. So division, for example, 1/3 divided by 4/9. So I don't know the table of 4/9. 4/9 का टेबल मुझे भी नहीं आता है. ओके, और it is very difficult to make the table of 4/9 and to divide by 4/9. So we will use here the one trick. What is your trick? Your trick is that we will, instead of divide we will take the reciprocal. Reciprocal मतलब क्या करेंगे? डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके आगे का जो भी फ्रैक्शन है उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. 4/9 है तो 9/4 हो जाएगा. See now, here 1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4/9 का 9/4 हो जाएगा. 3 1 जा 3 3 जा. Then 1 3 जा 3 and 1 4 जा 4. So this is your answer. Like that you can do the division. After that we have to study that with the next concept, which is the bod mass. What mean by the bod mass? This concept is, meaning of this concept is in these letters only. Bod means bracket. O means of. Then multiply. Then division. Then multiply. Then addition. Then subtraction. Whenever you have to given the question
fraction is given and you have to given there, use the board mass. Sometimes it is not given, use the board mass. Only you have to given the number of processes in the one example. जब एक ही एग्जांपल में ज्यादा प्रोसेस दी है तब तुम्हें वहां पे बोर्ड मास यूज करना होता है. बोर्ड मास मींस पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन और उसके बाद एट द लास्ट सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज द बोर्ड मास. ओके, when we will solve the example then you will get understood. Now the next concept which is the bracket and here remove. The next concept we will understood the bracket. What mean by the bracket? See, bracket are of different types. Which types are the bracket? So when sometimes like that bracket is there, which is known as the bar bracket. Okay, this bracket is known as the bar bracket. Another one, this is the small bracket. This one is the small bracket. And the another one concept, the next concept which is the curly bracket. The another one which is the square bracket. Okay, this is the small bracket. This is the curly bracket and this is the square bracket. Okay, and their series is also same. Whenever many brackets are given in the one example, that time first you have to solve the bar bracket. Secondly, you can solve the small bracket. Then third, you can solve the curly bracket, and at the last you can solve the square bracket. Like that, you can solve the answer. Then only your answer will come correct. If you have solved first, अगर तुमने सीरीज चेंज कर दी, पहले स्क्वायर सॉल्व किया, फिर स्मॉल किया, फिर कर्ली किया, फिर बार किया, तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा. ओके, तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा. तुम्हें यही सीरीज फॉलो करना है, बार, देन स्मॉल, देन कर्ली एंड देन स्क्वायर. इसमें भी जब बोर्ड मास सॉल्व करते हैं तब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. देन एट द एंड ओनली योर आंसर will be correct. Okay, so like that these are the concepts of the fraction. After that in the next video we will see the problems. Okay, so if you have not understood, you can see the video in the